Yeah, a very good afternoon to all. Yesterday, we have almost nearer to finish with what? The REAP protocol simulation in packet tracer, right? And in that, I have already told you the two different networks we are having, and those networks are connected with the ISP. ISP is already informed to you. That means already ISP is already known to you. That is called as Internet Service Provider. Okay. And now I have to connect the Chanwad network with Nasik network. And when you are connecting Chanwad network with Nasik network, at that time you need the connectivity of router in the picture, because routers are connected with the ISP and ISPs are going to reply with this. Okay. So this is what all about the assignment that we have to understood. Okay. So in that, I already told you our one network is having the IP addresses of 192.168.1.0. The another network is having addresses of 192.162.2.0. That is the KKBAG network, and one is SNJB network. Okay. And for communication between these two networks, we need the router. Okay. And that router, when one router is connected with another router, that means we can say that is connected over the internet. And this red line, okay, whatever red cable is there, that red cable is the serial communication cable, because router is having the two types of cables or two types of ports. One is serial port and another one is the Ethernet port. Okay. So Ethernet port is connected with the switch. Sir, Agrawal sir. So Ethernet port is connected with the switch, and the serial port is connected with the another router. Okay. That's why router is having two ports. One is switch, one is your Ethernet port and another one is your serial port. After that, as I already told you, if you are taking the one packet, let's see in the let's see on the screen, this is what the packet. I have taken this particular packet. I have selected this packet and I'm dropping the packet from PC0 to router 1. So when I'm dropping the packet from PC0 to router 1, at that time the delivery of packet is successful. See here, PC0 to router 1, the delivery of packet is successful. When I am dropping the packet from PC1 to router 1, then at the time also packet transmission is successful. But when I want to transfer the packet from PC0 to PC1, at that time there is a fail message. Why this fail come? Because no routing protocols are configured there. Okay, so we need to configure the routing protocol. What is the role of routing protocol? Routing protocol is used to provide the optimized path. Routing protocol का काम ही क्या होता है? Optimized path provide करने का काम होता है. And when they are providing the optimized path, at that time that particular packet will travel with that path and reach to the destination. Okay, so in that case, this router is maintaining the routing table. Every router is maintaining the routing table, right? Every router is maintaining the routing table, and that routing tables are exchanging their information from one to another after every 30 seconds. हर 30 seconds के बाद वो लोग क्या करते हैं, उसका इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं. ओके, सो दोज राउटर्स आर एक्सचेंजिंग देयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन राउटर टू अनदर राउटर. अनदर पार्ट, the number of hops that is transferred through the routing protocol is 15. The REAP is having the limitation of 15 only, right? तो जब आप लोग यहाँ से पैकेट भेजोगे, अभी यहाँ पे अपन कंसिडर करते हैं PC0 से PC1 में कितने होप्स होते हैं. PC0 to switch 1 hop, switch to router 2nd hop, router to router 3rd hop, router 1 to switch 1 4th hop, switch 1 to PC 5th hop. That means 5 hops of distance you required. 5 hops of matrix you require to reach to the destination. That you need to understand. ये चीज आपको क्या करनी है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है और ध्यान में रखना है. Okay. After that, we will proceed with the next part. As I already told you, PC0 and PC1 are unable to transfer the packets. Why? Because routing protocol is not configured. Now configure the routing protocol. So when you are clicking on the router PT, router 0, at that time this particular window will open. You need to go to the routing part. This routing contain two protocols. One is static and another one is REAP protocol. Okay, what is static? Static means all paths are fixed. Okay, the routes are predefined. सब पहले से define होता है. And dynamic means the routes are decided runtime. Routes you are going to decide runtime. That is called as REAP. So click on the REAP, and under this REAP you need to add the network. So which networks are there? So every router is connected with two networks here. One is your SNJB router, another one is your router to router, ISP router, ISP network.
The second network is the KKWAG network and another one is the ISP network. Now add that 10.0.0.0. You need to add this. Similarly, you need to add 192.168.1.0. 192.168.1.0. So both the networks are added. If you are adding this network, that means this router is able to catch the traffic from PC0 as well as router 0 is able to catch the traffic from router 1 also. Okay, because router 1 is on the network 10.0.0.0 and this PC0 is on the network 192.168.1.0. So in that way your router 0 is configured. Now configure router 1. Click on router 1, then go to RIP and write down here 10.0.0.0 and then write down 192.168.2.0. So in that fashion, both the networks are added. Now try to transfer the packet from this PC0 to PC1. Now we will check whether it is successful or not. See, this last packet is successfully reached to destination. Last packet is successfully reached to destination. And this, see, मेरा जो cursor घूम रहा है वहाँ पे. So in that way, your routing information protocol is configured. ओके आप लोगों को और एक चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ, जब आप इस पे क्लिक करते हो तो देखिए आपको लगता है कि सर मुझे यहाँ से कॉन्फ़िगर नहीं करना है. यू कैन कॉन्फ़िगर फ्रॉम हियर आल्सो. सी हियर राउटर इनेबल्ड, ये कमांड है राउटर की. ओके ये कमांड होती है. आप जैसे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके लिखते हो ना, वैसे ये कमांड प्रॉम्प्ट होता है राउटर इनेबल. उसके बाद राउटर कॉन्फ़िगर टर्मिनल. आप लोग उसको राउटर को कॉन्फ़िगर करना है ना, तो देखिए आप राउटर कॉन्फ़िग मोड में गए. आफ्टर कॉन्फ़िग मोड हैश आपने देखा राउटर RIP. मैंने यहाँ से टिक किया था, ये देखो ये टिक करने के बाद मैसेज आता है नीचे राउटर RIP. दिखा आपको? ओके तो यहाँ पे जब आप लोग रिप पे क्लिक करते हो और यहाँ पे अगर कुछ ऐड करते हो तो यहाँ पे देखिए आपको लगता है कि सर अभी यहाँ पे ना मुझे और एक नेटवर्क ऐड करना है. ओके सो यू कैन ऐड द नेटवर्क ऑल्सो. यहाँ पे जाइए, यहाँ पे लिखो NETWORK नेटवर्क 10.1.0.0. अपन ने 10.0.0.0 पहले ऐड किया था. अभी मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, नेटवर्क 10.1.0.0 और इसको क्या करो इंटर दो. आपने इंटर दिया ने क्या, ये नेटवर्क भी आपकी इसमें ऐड हो गया. ओके दैट पर्टिकुलर नेटवर्क आल्सो इज एडेड इन योर नेटवर्क. वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्यों, क्योंकि आपने कमांड प्रॉम्प्ट से दिया है. यानी आप लोग कमांड के थ्रू भी दे सकते हैं और आप लोग ऐसे भी दे सकते हैं. आपको लगता है कि सर यहाँ से एग्जिट करना है, यू जस्ट टाइप एग्जिट. ओके देखो आप बाहर आ गए. दिखा आपको कॉन्फिग राउटर था, अभी आप कॉन्फिग पे आए. ओके फिर से आप अगर एग्जिट देंगे, देखिए आप राउटर से ही बाहर आ गए. दिखा, यानी आप लोग जो राउटर कॉन्फिग मोड में थे, आप लोग इस वजह से कमांड के थ्रू भी कर सकते हो ऑपरेट, और आप लोग आपको जो GUI बेस दिया है, ये GUI दिया है, इसके थ्रू भी क्या कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर. ओके सो होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन. Now, are you able to configure the routing topology? Hello. Yes, sir. आपको? Okay, shall I ask you 2-3 questions? Can anyone tell me up to how many hops router will work in RIP protocol? So 15. 15. Very good. And tell me when count to infinity problem will come? Count to infinity problem कब आता है? At 16. Huh? At 16. Very good. When your hop count is more than 15, that means your 16th number system is count to infinity problem. That means you are not able to identify that particular system and your data will not get transferred. What is the drawback of this RIP protocol? In every 30 seconds, RIP protocol is updating their routing table. Okay, routing table में क्या जाता है? Routing table maintains the 3-4 fields. Okay, which are those fields? Source address, destination address, then number of hops required to reach to the destination. Those fields are called as what? Routing fields. तो आपको क्या होना चाहिए वहां पे ध्यान में रखना है. ओके तो routing table कैसे दिखता है, that I will show you later on in the lecture part. Okay अभी अपने को थर्ड यूनिट शुरू करना है. But this topology you should understand. Without configuring router, you are not able to communicate from one system to another system, from one autonomous system to another autonomous system.
राउटर के अंदर और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, दैट प्रोटोकॉल्स वी विल सी वन बाय वन in the third unit. Okay, so third unit is basically the network layer, and under network layer, as you know, router is the device which is working on the network layer, and we have to learn all these network layer protocols. अपने को network layer के related सभी protocols को यहाँ पे properly study करना है, उसका understanding करना है. Okay, so this is all about your fifth assignment, that is configuration of router in packet tracer. Okay, so almost our 5 assignments are over. Okay, so everyone is requested, please go on the blog, download the manuals. Okay, at the bottom of every manual, one assignments are given. Okay, so start writing the assignments and upload it into the Google Classroom. Okay, I have already created the 3 assignment Google Classroom. You just need to upload your PDF into that particular Google Classroom. Okay, so don't wait कि sir बोलेंगे फिर last में हम लोग update करेंगे. If the practical is finished, go to blog, download the manual. Okay, and try to write down all the assignment questions. Okay, so this is all about RIP protocol. Now you need अभी आप लोगों को और एक टास्क देता हूँ, एक फिर से एक राउटर यहाँ पे ऐड करना है आपको. ओके, एक राउटर उठाना है और यहाँ पे आपको ऐड कर देना है. दिस टास्क आई विल गिव यू. ओके, ये राउटर यहाँ पे आपको लेना है, फिर आपको सिमिलरली और एक स्विच लेना है. थोड़ा सा टोपोलॉजी डिफिकल्ट करते हैं ना, और एक स्विच लेना है. इस स्विच के साथ आपको एक 2-3 कंप्यूटर्स जोड़ने हैं. इसका कनेक्टिविटी करो, इसका कनेक्टिविटी करो, और पैकेट PC0 से PC2 तक जाना चाहिए. बराबर, PC2 से PC1 तक जाना चाहिए. और राउटिंग टेबल में अभी क्या क्या अपडेट आएंगे, क्या क्या नहीं, ये आपको परफॉर्म करना है. सो हैव यू गॉट व्हाट यू हैव टू डू एट द होम, व्हाट असाइनमेंट यू हैव टू परफॉर्म. माइनर चेंज आई हैव सजेस्टेड यू इन द असाइनमेंट. सो कैन यू ट्राई दिस असाइनमेंट एट होम? Yes, sir. Yes. That's great. Okay, so any questions? If no, then I will proceed further. Yes, any questions are there, students? No? Sir, Yes. सही लास्ट में जो सक्सेसफुल फेल्ड मैसेज आता है, हाँ. वहाँ पे बहुत सारे कॉलम है, उसमें से सर नम वाला कॉलम जो है उसका हाँ. मीनिंग क्या है सर? अरे कुछ नहीं, वो तो कितने पैकेट भेजे हैं ना, पैकेट का नंबर बता रहा है. 0, 1, 2, यानी कौन से नंबर का पैकेट है. अपन ने अभी तक कितने पैकेट भेजे? 4 पैकेट. तो ये नंबर है. मैं नेक्स्ट पैकेट भेजूंगा तो वहाँ पे 5 नंबर का पैकेट आएगा. ओके, जो फेल हुआ वो देखो रेड कलर में आया, जो सक्सेस हुए देखो उसके कलर अलग आए. ओके, सो सेम थिंग वी हैव स्टडीड इन पैकेट ट्रेसर, सॉरी वायर शार्क असाइनमेंट आल्सो. So those packets are getting dropped. Those packets are represented by red and black color, and those packets are getting successfully reached to destination are represented with the help of green color. Fine? Yes, sir. Okay. Yes, any other questions? Shall we proceed with the next unit now? So everyone try to complete this assignment, okay? Yes. Just a minute. Yes, this is, you just make it 2019 pattern. Okay, and this is your third unit. Instead of 4, make it 3. Okay, so this is your third unit, and third unit is based on network layer. Okay, so this is one of the most important layer as far as your OSI and TCP/IP models are concerned. Okay, and in both the standards or in both the models, this particular layer is very important, and this layer is present in TCP/IP as well as in OSI. As I already told you, network layer is the third layer of OSI model, and network layer is the responsible to create the packets. Network layer is responsible to create the
packets. In second unit in data link layer, we have studied data link layer is responsible to create the frames, right? So those frames are now converted into packets. जो फ्रेम आप लोगों ने देखी थी वो अभी पैकेट में कन्वर्ट हो चुकी है. पैकेट में कन्वर्ट होना यानी क्या? नाउ दैट डेटा इज अगेन इनकोडेड. What happen in encoded? Again, one header and trailer is attached. What happen in header and trailer attached? You are giving the IP addresses, that means source IP address and destination IP addresses are attaching with the data, whatever data you want to transfer. Okay, so this network layer carrying IP addresses, or this layer, the responsibility of this layer is to work with the IP addresses. That is also called as logical addresses, and logical addresses are 32-bit addresses. जो logical addresses होते हैं वो 32-bit addresses होते हैं, and physical addresses are 48-bit addresses. जो physical addresses होते हैं वो कितने बिट के होते हैं? 48 बिट के होते हैं, और लॉजिकल एड्रेसेस जो होते हैं वो कितने बिट के होते हैं? 32 बिट्स के होते हैं. ओके, सो व्हाटएवर आईपी एड्रेसेस वी हैव असाइन्ड इन पैकेट ट्रेसर 192.168, those addresses are called as logical. Those logical addresses are not fixed, but your MAC addresses are fixed. Hardware addresses are confirmed, unique, okay, and used uniquely throughout the world. But IP addresses can be changed. Okay, so this is all about what? The network layer. The network layer is transmitting their data to transport layer, because network layer के बाद और एक layer आता है और उसको बुलाया जाता है transport layer. Now this is what now we have to study the issues here, as you already studied the issues which are there in your data link layer. So similarly you need to understand the issues which are there in network layer. Okay, क्योंकि हर layer जब बनाया गया तब उसके अंदर की issues थे, and we need to resolve that particular issues, or whoever committee is designing this particular, or whoever that means IETF is one of the big standardization company who is working on IP addressing, then computer networking layers and devices and all. So that company is working on the issues, whatever issues the network layer is having. So what issues are there, student? Stored and forward packet. So whatever packets are there, how you are going to store and how you are forwarding, that is again one of the issue. What kind of services you are going to provide to transport layer? So जब डेटा नेटवर्क लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जाता है तो आपको वो भी चेक करना है कि वहां पे कौन कौन से टाइप के इश्यूज आएंगे. Implementation of connectionless service. Whatever data you are transmitting, that data is transmitted through the two types of connection. One is wireless connection and one is wired connection. Okay, so connection oriented systems and connection less system. So in that case we need to understand what kind of issues are there, and then comparison of virtual circuit and datagram subnets. What is this virtual circuit? What is datagram subnet? That I will teach you in this unit only later on. Okay, so these are the issues. How to store and forward the packet, what kind of services are provided to transport layer, what type of implementation is there for connectionless service, what kind of implementation is there for connection oriented service, and how the virtual circuit and datagram circuits are there. So all issues we need to address one by one. अपन वो one by one क्या करेंगे? Address करेंगे. This is the outline of your third unit. In that we need to understand the switching techniques, then IP protocol, the differences between IPv4 and IPv6, subnetting. मैंने आपको last time ही बोला था कि subnetting एक part आएगा, उसके ऊपर भी अपने को फोकस करना है. NAT, NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था. क्लास ए को क्लास बी के साथ कम्युनिकेट करना है, तो जब दो अलग अलग क्लासेस एक में के साथ कम्युनिकेट होते हैं तो कम्युनिकेट करवाने का काम NAT करता है. If NAT is absent there, in that case one class is not going to communicate with the another class. Then ICMP, Internet Control Messaging Protocol. As I already told you, this messaging protocol is handling the work of messaging and firing the queries, or error message का भी वो handling करता है. Then routing protocols we need to understand. Out of that, RIP we have already studied. OSPF, BGP is there, and then rest of the protocols we need to study. Then mobile IP, routing in MANET, mobile ad hoc network. MANET stand for mobile ad hoc network, and lot of research is going on in MANET. Okay, so many more researchers are working in this field also. That is AODV and DSR. Okay. AODV is again one of the protocol, and DSR is again one of the protocol. So how these protocols will work and all, everything we will see later on. Okay, so now we will begin with the first topic, that is switching techniques. Okay, so switching techniques is really very important.
Why? Because when data is, let's say I want to communicate one of the packet to everyone, as near about 40 plus students are there in the lecture. Okay, so if 40 plus students are there in the lecture, whatever I am talking here, that particular part is now converted into packets, frames. That particular frames are transferred through our server and reach to the destination. यानी आप कहाँ पे भी रहो, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में, that packets will reach to you. How that particular packets are transferred, how that switching is done. So in order to understand that particular technique, we need to understand the switching techniques. Because we studied in the design issues, the first issue is how to store and forward the packets. ये सबसे पहला issue था. उस issue को resolve करने के लिए कुछ techniques बनाई गई और वही टेक्निक को अपने को क्या करना है, वन बाय वन अभी अंडरस्टूड करना है, अपने को यहाँ पे समझ में लेना है. ओके, सो वी विल सी द ऑल दिस थ्री टेक्निक्स वन बाय वन. हाउ मेनी स्विचिंग टेक्निक्स आर देयर? टोटल 3 switching techniques are there: circuit switching, packet switching, and message switching. Nowadays, the most widely used switching technique is packet switching. Again, under that packet switching, 2 types of switchings are there: datagram switching and virtual packet switching. Okay, and message switching nowadays is used. That means the application of message switching is very limited nowadays. Circuit switching are having their own drawbacks. To overcome the drawbacks of circuit switching and message switching, the packet switching comes into the picture. इसलिए देखिए वो मिडल में बताया, अगर आप डायग्राम फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पैकेट स्विचिंग इज देयर इन द मिडल. ओके, सो whatever drawbacks are there in circuit and message, those drawbacks are covered in packet. So what kind of drawbacks are there? That drawbacks we need to study one by one. So we will proceed with the first technique, that is circuit switching. अभी circuit switching exactly होता क्या है? When 2 nodes are going to communicate with each other over a dedicated communication path is circuit switching. Always remember, your telephone communication is circuit switching, because whatever connection is there at your home, okay, that is having one cable. That cable is connected with the telephone exchange. That telephone exchange is again connected with the another telephone exchange, and your data is transferred from source to destination. Let's say I want to call from Chanwad and the receiver is from Nasik. In that case, whatever telephone, landline phone I am having here, that is connected with the dedicated line, that is connected with the telecom exchange of Chanwad. From that Chanwad telecom exchange, that signal will pass to the Nasik telecom exchange, and Nasik telecom exchange will transfer that signal to the receiver end in the Nasik. That means a full-fledged dedicated path is there. पूरा dedicated path वहाँ पे बनाया जाता है, and predefined routes are there. पहले से ही उसका कनेक्शन किया जाता है. Okay, if the path is predefined, then no other path is permitted. That data is travel from that path only. In circuit switching, to transfer the data, circuit must be established so that data transfer take place. आपका data transfer करने से पहले circuit establish होना चाहिए. So which kind of 3 techniques or which kind of 3 phases are there through which circuit switching that means data transmission is take place? The first phase is establish circuit. आपको circuit में, दोनों circuit में connection बनाना है. ये तो देखा कि एक जगह पे फोन डेड है और दूसरी जगह पे फोन चल रहा है. So there is no proper establishment of circuit. Once the circuit is established, then start transmitting the data. इसलिए जब भी फोन उठाते हैं सबसे पहले आप लोग क्या बोलते हैं? हेलो. क्या डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर करना शुरू करते हैं? नहीं. So our first task is to check whether the circuit is properly established or not. If it is not established, then you are not transmitting the data. Okay, so first phase is circuit establishment. Second is the actual transmission of data, and once the data is transferred, the last phase is disconnect the circuit. एक बार आपका डेटा प्रॉपर्ली ट्रांसफर हो गया तो लास्ट फेज में क्या होगा? आपका सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा. ओके, सो दिस इज सर्किट स्विचिंग. हाउ सर्किट स्विचिंग इज टेक प्लेस? see in diagram. As I already told you, telephone is one of the example. On both the side, telephones are shown, and one big architecture is there, and under that particular these what you can say, the dark circles are nothing but the circuits from where your data is transferred, or that is the telecom exchange path. Okay, and dedicated circuit is there. If you observe this particular green line, so this circuitry is formed with the dedicated lines.
So circuit switching was designed for voice applications. Telephone is one of the best example. Before user can make a call, virtual path between the caller and callee is established. As I already told you, it will pass through the 3 stages: connection establishment, then data transfer, and then connection close. Okay, so this is all about circuit switching. But what happens, students, if this dedicated path is breakdown? गलती से भी अगर ये डेडिकेटेड पाथ ब्रेकडाउन हो गया तो सामने डेटा कैसे ट्रांसफर करोगे, क्योंकि आपका जो पाथ है वो प्रीडिफाइन है, दूसरा पाथ नहीं ले सकता है वो. ओके, सो इन दैट केस दिस इज व्हाट द ड्रॉबैक ऑफ सर्किट स्विचिंग. ये होता है उसका ड्रॉबैक. ओके, तो सर्किट स्विचिंग में देखिए, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, थ्रू मल्टीपल पाथ्स आप लोग डेटा भेज सकते हैं और ये उसका डायग्राम है. ओके, सो आई थिंक सो सर्किट स्विचिंग इज क्लियर टू एवरीवन. Now the next topic is message switching. Okay, so what happen in message switching? देखिए आजकल पहले एसएमएस आते थे, 160 कैरेक्टर्स का लिमिट होता था, राइट? अगर आप एक फिर यानी केयरफुली आप लोग क्या करते थे, 160 तक ही कैरेक्टर जाएंगे इसका केयर लेते थे. Why? क्योंकि अगर 161 पे कैरेक्टर हो गया तो 159 कैरेक्टर तो वेस्ट होंगे ही होंगे. उसी के साथ आपको एक मैसेज की जगह पे 2 मैसेज का चार्ज लगता था. आई डोंट नो आप लोग जब से व्हाट्सएप आया तब से मैसेजिंग के अंदर ये चीजें देखते हैं या नहीं. ओके, बट व्हेन दैट मींस व्हेन वी परचेज द मोबाइल इन 2000 or 2002, at that time this WhatsApp and all these technologies are not there. Okay, so in that case we are chatting through the SMS. Okay, so that is what the messaging application. That's why I already told you nowadays message switching is the absolute method. Okay, or very few companies like banking companies, they are using this kind of message switching. Why? Because they are sending the OTPs, they are sending your balance credited, balance debited messages and all. Okay, so through that message switching is most widely used nowadays in that fashion. और पहले actual use के लिए users are using the message switching end to end for end to end communication. But nowadays message switching technique is used for specific purposes. That's why message switching is outdated nowadays. Why it is outdated, क्यों ये नहीं चला, या इसको आउटडेट होने के पीछे रीजन क्या था, that we will see one by one. Okay, see here in message switching, whole message is treated as a data unit and the data is transferred the full that means full-fledged data you are going to transfer entirely. What is the meaning of this? That means आप लोगों को क्या करना था यहाँ पे, whatever data is received by the switches. Okay, these are the switches. See here, these yellow color portions, these are the switches. When I am transmitting the data from A to 1, at that time that particular data is transferred from A to 1 and that switch is having their own buffer capacity. वो switch में खुद का buffer था. A switch working on the message switching, first it receives the whole message, buffer it until there are resources available to transfer. यानी आप लोग आपका मोबाइल बंद होने दो. ओके, उस केस में भी आप जब मोबाइल स्टार्ट करते हो तो ऑटोमेटिक मैसेजेस डिलीवर्ड होते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? जो मैसेज आया है मैसेज स्विचिंग में वो आएगा, स्विच जो बताया था उसके अंदर बफर होगा और फिर आगे भेजा जाएगा. बट व्हाट इज द इश्यू ऑफ दिस? इफ द नेक्स्ट होप इज नॉट हैविंग इनफ सोर्सेस, चेक करो ये जो आपका स्विच 1 है इसके अंदर डेटा स्टोर करने के लिए स्पेस अवेलेबल है. बट जब नेक्स्ट स्विच के ऊपर जाओगे, स्विच नंबर 2, एट दैट टाइम दैट स्विच इज नॉट हैविंग इनफ स्टोरेज बिकॉज ऑलरेडी उसके पास खुद का पहले से डेटा स्टोर है जो उसने आगे भेजा नहीं है. सो इन दैट केस आपका मैसेज क्या हो सकता है, आपको वेट करना पड़ेगा. ओके, बिकॉज द नेक्स्ट होप इज नॉट हैविंग इनफ रिसोर्स टू अकोमोडेट द लार्ज मैसेज. आगे वाला जो रिसोर्स है उसके पास लार्ज मैसेज अकोमोडेट करने के लिए जगह नहीं है. मैसेज इज स्टोर्ड एंड स्विच वेट. मैसेज वो पहले वाले स्विच में रहेगा और स्विच को वेट करना पड़ेगा. Okay, so this is what the message switching. So see here, what happen in message switching? अगर आप लोग देखोगे तो ये रेड कलर के जो cylindrical shapes हैं, those switch shapes are having memories. Okay, and that particular memory is used to store the messages from M1, M2, M3 and M1 and M2. Okay, so that message see वो कैसे भेजा जा रहा है. M1 मैसेज आया, इस स्विच के पास गया, इस स्विच ने वो मैसेज आगे फॉरवर्ड किया, स्टोर एंड फॉरवर्ड. ओके, तो सबसे पहला नेटवर्क का इश्यू देखा था अपन डिजाइन का कि हाउ टू स्टोर एंड हाउ टू फॉरवर्ड द पैकेट्स. सो कैन आई से विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्निक आई एम एबल टू स्टोर एंड फॉरवर्ड द पैकेट्स. टेक्निक में भी डिफरेंट, टेक्निक में भी स्लो, टेक्निक में भी फास्ट, बट योर डेटा विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. तो आपको यहाँ पे ये चीज को प्रॉपरली क्या करना है,
अंडरस्टैंड करना। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज मैसेज स्विचिंग। सी हियर, एवरी स्विच इन ट्रांजिट नीड्स इनफ स्टोरेज टू अकोमोडेट द मैसेज। देखिए हर स्विच जो जो अंदर अंदर आ रहा है ट्रांजिशन में, जैसे मुझे यहां से जाना है मालेगांव, ओके, सो every station like Sondana, Umrana and then Malegaon. So all these stations must have enough storage. All these stations must have, or whatever road is there which is passing through Sondana and Umrana, those roads should be clear. Then and then I am able to reach to the destination. Similarly, whatever switches I am having, those switches should have enough storage memory to store the message and forward the message. अगर होगा तो ठीक, नहीं हुआ तो problem. Because of store and forward technique and waits included until the resources are available. जब तक store forward और resource available नहीं होता है तब तक wait करना पड़ेगा. Message switching was not the solution for streaming media. Real time media में अगर real time अगर application आपको कोई handle करना है तो message switching के साथ नहीं काम चलेगा. अभी मुझे बताइए Zoom में मुझे अभी lecture लेना है और resource available नहीं है और आप सभी लोग login कर चुके हो. अगर मैं थोड़ी देर के बाद रिसोर्स अवेलेबल होने के बाद डेटा आपको डिलीवर करूं तो चलेगा क्या? नो। सो रियल टाइम स्ट्रीमिंग के लिए मैसेज स्विचिंग इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन. वी नीड टू गो फॉर अनदर स्विचिंग टेक्निक. सो मैसेज स्विचिंग इज क्लियर टू एवरीवन. सर्किट स्विचिंग इज क्लियर. मैसेज स्विचिंग इज आल्सो क्लियर. सो टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ सर्किट एंड मैसेज स्विचिंग वी नीड द अनदर टेक्निक. We need the another kind of technology that is called as packet switching. The shortcoming of both the techniques give birth to the new idea of switching that is called as packet switching. The entire message is broken down into smaller chunks. देखिए पहले क्या हो रहा था, पूरा एक मैसेज जब तक रीच नहीं होता है तब तक आगे नहीं भेजा जा रहा था. अभी आप लोगों ने क्या किया, पूरे मैसेज के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए. अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. Let's say you all are there in the Chanwad campus, okay? And if I am assigning you one of the task मैंने ऐसे दिया आपको कि you need to reach the नासिक. आपको नासिक पहुंचना है सभी को. Whatever path you want to take, you take it. Okay? Whatever transport media you want to take it. But I need you all people to reach as soon as possible. So those who will reach to Nasik first, second, and third, they will get the prizes. Okay, so everyone started their journey. Okay, but journey is through different media. So can I say whatever message, that means you all people are the one message. Now destination is known, task is different, which is already given to you. Now everyone is applying their own ideas, okay, and try to reach to the destination. Someone will take the path from Lasalgaon, someone will take the path from Pimpalgaon, someone will take the path from Satana, okay, Devra, and they are trying to reach to what? The Nasik. So in that case what happens student, आपका entire message जब आपने broken down किया और वो नेटवर्क में जो जो पाथ उसको खाली मिला, एक स्विच बिजी होगा तो दूसरे स्विच के थ्रू, दूसरा स्विच बिजी होगा तो तीसरे स्विच के थ्रू. इस वे से उसने क्या किया, फटाफट डेटा ट्रांसफर करना शुरू किया. एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्निक आपका डेटा सामने वाले मेमोरी तक पहुंच गया. सी हियर, the switching information is added to the header of each packet and transmitted independently. सभी हेडर को पता, यानी सभी बच्चों को पता था, आप सभी को पता था कि आपको कहां पहुंचना है. तो everyone is having their own header जिसमें सोर्स का एड्रेस चांदवड एंड डेस्टिनेशन का एड्रेस नासिक. ओके, then it is easier for the intermediate networking devices to store small size packets and they do not take much resources either on the carrier path or in the internal memory of switches. That's why it is called as packet switching. That's why it is called as packet switching. Packet switching के दो अलग-अलग टेक्निक्स हैं, डेटाग्राम एंड वर्चुअल. पैकेट स्विचिंग में आप लोग मैसेज को ब्रेक करते हो. पैकेट्स आर सेंड सीक्वेंशियली वन एट अ टाइम एक ही भेजोगे लेकिन पाथ अलग-अलग रहेंगे. Every network handles the stream of packet and it attempt to route them through the network and deliver to the intended destination. अब इसका सिंपल सा देखिए, मैं जो बता रहा था उसका एग्जांपल. मेरे पास पूरा मैसेज है, मैंने उस पूरे मैसेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4. ऑल 4 पैकेट्स आर टेकिंग डिफरेंट पाथ. स्टूडेंट्स, देयर इज नो डेडिकेटेड पाथ. यहाँ पे कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं है. जिसको जो रूट मिल रहा है और जो बेस्ट रूट लग रहा है उस रूट से वो डेटा ले रहा है और आगे भेज रहा है. देखिए आप लोग यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक को पहुंचने के लिए 1 2 3 4 होप्स में पहुंच जाएगा. 3 को पहुंचने के लिए देखिए 1 2 3 4, ये भी 4 होप में पहुंच जाएगा.
दो, 1 2 3 4, देखिए सब लोग एक एक ही डिस्टेंस से पहुंच रहे हैं, सेम डिस्टेंस के साथ पहुंच रहे हैं, लेकिन सभी ने अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्या किया है, पाथ को चेंज किया है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, सो टू approaches we need to understand. One is the datagram approach and another one is the virtual circuit approach. So this technique we will study later on. अभी ये टेक्निक्स अपन क्या करेंगे, बाद में स्टडी करेंगे in the next lecture. Okay, so with this I will stop here. So are you getting this particular concept clearly? Hello. Yes. Okay, thank you.